हर मिनिस्ट्री अपने अपने डिपार्टमेंट में कामयाब रही है। लेबर एंड ट्राइबल मिनिस्ट्री भी उसका एक अहम हिस्सा है। बहुत कुछ समझने और समझाने के लिए अभी बाकी है। लेबर मिनिस्ट्री को किसी एक दायरे में सीमित नहीं किया जा सकता। कल फिर हम इस सेगमेंट में इस मिनिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब एक खास खुशखबर हमारे उन अचीवर्स के लिए। आप किसी भी बिजनेस या कारोबार को चला रहे हो जिसे आपने अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया हो, कंपनी हो या इंडस्ट्री, इनोवेशन मीडिया आपको इस शो के द्वारा सम्मानित करने जा रहा है। यह पुरस्कार न सिर्फ आपके हिम्मत को बढ़ावा देगा बल्कि आपके समाज में, आपके कारोबारी दुनिया में आपके नाम को रोशन करने का जरिया भी बनेगा। आप अपने नॉमिनेशन के लिए संपर्क करें। तो दोस्तों, ये मौका अपने हाथ से जाने न दें। राज्यों के भीतर चुनाव के परिणाम आते ही तेल कंपनियों ने 24 घंटों के अंदर पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। पिछले 11 महीनों में ये 7वीं बार है जब पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की गई है। आने वाले समय में डीजल की कीमतों में 4 रुपए की वृद्धि और रसोई गैस सिलेंडरों में 25 से 50 रुपए तक वृद्धि होने के आसार हैं। मई 2009 के बाद से पेट्रोल की कीमतों में 50% की वृद्धि की गई है, जिसमें से 30% की वृद्धि तो पिछले 1 साल में ही हुई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि दामों में बढ़ोतरी के कारण आजकल घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तेल बाजार का तर्क है कि 15 जनवरी के अंतिम संशोधन के बाद से कच्चे तेल के मिश्रण व खरीदने के लिए तेल 118 से 119 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच गया है। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के कारण ज्यादातर वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ता है। इस कारण आम आदमी का बजट बढ़ने से उसे परेशानी होती है। आने वाले समय में केरोसिन, डीजल और कुकिंग गैस के दाम बढ़ने के आसार हैं। इस कारण सरकार एक मिनिस्ट्रियल पैनल की मीटिंग करने जा रही है, जिससे कि वो बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगा सके। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आज हम फिर बात करेंगे। ये कॉर्पोरेट वालों की जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों का बल्कि आम लोगों की जरूरत का भी ध्यान रखें जो उनसे ना भी जुड़े हों। हर तरह से इंसानों की जरूरत जो रोजाना जिंदगी के लिए जरूरी है पूरी हो। ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हम अनजान हैं और जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं, ये सारी CSR एक्टिविटी करते हुए कंपनी को क्या फायदा है? क्योंकि कंपनियां सिर्फ फायदे के लिए काम करती हैं, ऐसा हमारे दर्शकों का मानना है। See, there are a lot of surveys which are conducted in other countries like say US and Europe. So many of these surveys, there's some of the things which is, seems to be kind of emerging very common. Increasingly what we are seeing is that the companies which are incorporated to CSR into their the working policies, the way they are going about doing their activities, there is an increase in the trust among the investors, among the consumers, and increasingly they are going after products of these companies. One can give a lot of examples wherein it is not, it's no longer just the brand. There are even companies which have come and branded themselves not on the basis of their name or their product, but more on the values, because they stood for certain values which was appealing to the consumers. So what is going to happen is increasingly in a fierce sort of a competitive scenario, the CSR is one aspect that is likely to differentiate. So in India itself, you have a lot of these things, showing concerns for environment, like say save the tiger or save the environment. There are so many things people talk about. The companies are endorsing it. They are, there are so many, even the social networks are up. There are so many discussions that other things that happens. So what happens is, so all these things, if the company has to capitalize on these sentiments, then the CSR is going to differentiate them from others. And people are going to consider it increasingly when they decide or when they think about, or even as a kind of adding value to their existing brand.
So the CSR will definitely will have an impact. मैं आपके इस उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि कंपनियां ये सारी गिने चुने कुछ नाम होते होंगे जो आप बता रहे हैं कि कंपनी को ये फायदा है, कंपनी को CSR करने से शेयर्स में इन्वेस्ट करने वालों को ब्रांडिंग में या कंपनी के इमेज बिल्डिंग में फायदा होगा, ऐसा आपने कहा है। बट आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन क्या कंपनियां सीरियसली कर रही हैं इसको? Yes, I think I mean, like say, look at the latest report, so that sort of ranked, various companies on about 12 sectors, and if you look at it then you would see surprisingly that India is among one of the top 4 companies in Asia in terms of the corporate social responsibility. That primarily it means that there is a lot of companies in India are actually into the CSR. And there is also one study which talks about 300 companies, who are carrying out this corporate social responsibility activities. And then the report also talks about that these are spread across about 29 thematic areas. And it could be in health, it could be in education, it could be where there is a lot of community development or involvement, or it could be just some sort of a philanthropic activities. There are, the report also talks about. Also, there are other data that shows there is also a lot of donation which is given by many of these companies, which is a sizable amount, and it is increasing over the period. If you compare to what was donated in 2009, and there is an increase in 2010, and what we are anticipating is it's likely to increase. So in that sense, yes, the companies in India are carrying out quite a lot of CSR activities, but what seems to be happening is not many companies possibly have correctly understood what CSR, because there is also a simplistic way of looking at CSR wherein they would think that, okay, I'll just ask my employees to go spend some time, or we will just go to orphanage, or we will just donate some money, or it would be certain other things, but it's more of a sort of a minimalistic sort of an engagement, and it's a one-time activity. So it might be difficult to consider them as a sort of a corporate social responsibility. The corporate social responsibility is more of a holistic, it's a concept. You need to kind of imbibe it, into the corporate culture. You need to show it in so many different ways, because imbibing is not enough. It needs to be reflected in what you are doing, and how you are more in terms of what you are doing, and how you are making sure that it's going to benefit the people and the environment. So that's how we are looking at it. तो डॉक्टर साहब, आपका ऐसा कहना है कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से, CSR करने से कंपनी की इमेज को बिल्ड करने का फ़ायदा है, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने का फ़ायदा है, ये सारी बातें आप बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को भी। लेकिन आप इसमें कुछ कह रहे थे कि इससे पर्यावरण को भी फ़ायदा है। अब पर्यावरण को इस एक्टिविटी से क्या फ़ायदा है? Yes, see, it depends on the kind of activity that can be included under the CSR. But also the other way of looking at it is, let's say that a particular activity which is carried out by a particular company likely to adversely impact. So the company should show responsibility by possibly investing in certain processes, maybe certain technologies, or some certain mitigation efforts by which that the impact on the environment can be reduced. Of course, there are so many other ways of doing it, but there is a lot of debate whether it is right or wrong. And so if companies can also possibly offset some of this environmental problems. So this is more from the point of view of that the company's activities are directly impacting the environment, and they need to do something about it. The other option is that maybe, like, say, for example, a particular company activity is not directly impacting on the environment, but still I can take interest in doing certain things which will benefit the environment.
So it could be anything. Maybe like it's just a way of doing it. Maybe it's just like saving the electricity, or it could be like sensitizing their own employees in saving energy, or reusing it, recycling it. So all these small, though it is a very small activities, they can actually measure it and then see that how they can actually contribute to the environment. So in that sense, yes. तो आपका ये कहना है कि ये सारी एक्टिविटी करते हुए सारी कंपनियों का नाम होता है, लेकिन मैंने नहीं सुना है बहुत सारी कंपनियां ये एक्टिविटीज़ कर रही हैं। सिर्फ जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, टाटाज हैं, रेड्डीज लैब हैं, विप्रोज है, ऐसे 3-4 कंपनियों के गिने चुने लोगों के नाम आए हैं। तो बाकी लोग अपनी अगर CSR एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो भी जनता तक पहुंचना चाहिए। तो आपकी कंपनियों के लिए क्या एडवाइस होगी, कंपनी CSR एक्टिविटी कैसे कैसे शुरू करे? Yes, so I think there's a couple of issues are here. One is of course awareness. So suppose, CSR per se may not be widely known among the common people. So there is a necessity to sort of create visibility, create awareness, because it also benefits in a way that the people can also demand. The companies, let's say that there is a particular area where the company is located, people living in